अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू काम कहानी, अ पॉडकास्ट फॉर द करियर क्यूरियस। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फ़हीम साहब। He has most recently been the Chief Procurement Officer for British Petroleum, Canada. He is with us and we'll talk about procurement and supply chain management. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हारिस। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जनाब। अच्छा, मुझे जस्ट फॉर द ऑडियंस हमें थोड़ा सा बताएं कि प्रोक्योरमेंट क्या होती है और उसकी सप्लाई चेन में क्या जगह होती है। ओके, सो प्रोक्योरमेंट तो जैसे सबको पता है, इट्स प्रोक्योरिंग गुड्स, यानी आपने ख़रीदारी करनी है। समटाइम्स इट्स नोन एज बाइंग, समटाइम्स इट्स नोन एज प्रोक्योरमेंट, बट ऑन अ जनरल, ऑन अ वाइडर रेंज, इट्स द होल साइकिल ऑफ मटीरियल व्हेन समबडी इज प्रोक्योरिंग इट। सो इट कैन बी planning phase, it can be procuring the material, it can be storing the material, it can be logistics. So supply chain, when we talk about supply chain, so ज़ाहिर है उसमें biggest element जो है वो purchasing है, because that is where the most cost is involved, that is where most of the process is now involved. लेकिन जब आप procure करते हैं material, तो that means कि जी you have to do all the planning, कि जी उसकी cost क्या है, budgeting क्या है, economics क्या है, कितना time लगेगा, lead time क्या है, आएगा तो are you going to keep it, are you going to use it, whether you have to store it, all of that stuff, and that includes logistics as well. कि आप अमेरिका से मंगवा रहे हैं, कि आप पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं, are there foreign exchanges? So all these things kind of combine into supply chain management. So any professional who works in supply chain management has to know all those things if he really wants to be a real professional. तो प्रोक्योरमेंट इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन क्यों है फॉर एनी कंपनी? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट। सबसे बड़ी बात तो कॉस्ट है, और किसी भी आप कंपनी में देख लें, अगर आप ज़ाहिर है मैं तो मेरा एक्सपीरियंस तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से है, बट आप मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट्स में देख लें, इफ़ यू आर लेट्स अज्यूम बिल्डिंग अ कार, तो उसका जो रॉ मटेरियल आप ख़रीदेंगे या उसको स्टोर करेंगे, दिस इज़ ऑल कॉस्ट। दैट्स वाई एट वन टाइम सप्लाई चेन वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। वो होता ये था कि जी यार ये तो परचेजिंग कर रहा है, इसका क्या है, ये ख़रीद के लिए आएगा एंड देन वील डू दैट। बट देयर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व। लोग ख़रीदारी करते हैं एंड देन दे डोंट लुक एट द बैकग्राउंड। जिस तरह आपने वो आइसबर्ग देखा होगा ना, ऊपर से तो आप देख लेते हैं, नीचे क्या एलिमेंट्स हैं वो पीपल डोंट लुक एट दैट। तो लेटली ये हुआ है, आई थिंक दिस हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द टाइम कि सप्लाई चेन इन बिगर ऑर्गेनाइजेशंस, and as you know कि my most of the career has been both in Pakistan as well as outside Pakistan as well, तो supply chain has become a very important element of the organizations. मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था सप्लाई चेन, तो ये बिल्कुल जो आपकी बात है ना कि जी परचेजिंग करनी है, anybody can come in and buy and they'll get 3 bids and they'll get the material in. So that was a very small element. Ultimately ऑर्गेनाइजेशन में ये हुआ है, जैसे मैं BP में काम करता था, ये PPL में सप्लाई चेन manager or leader, whoever manages supply chain, have ultimately became part of the leadership team, because that's where the cost is, that's where the planning is, and that impacts a lot on your financial outlook of the company. So that's why it's become a lot more integral. So it's not just personal. So tell us something about, just summarize your journey so far, like from where you started in Pakistan and where you ended up in Calgary, Canada. Okay, so like everybody, यहाँ पे आपको पता है ना, जब करियर आदमी स्टार्ट करता है तो you look at friends, you look at your parents, and then you go for either engineering or medical. Of course. तो मेरी भी जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई थी। I got good grades in जैसे होता है इंटरमीडिएट में, so I went into engineering. Was medical on the cards ever? No, medical probably was not. That was one difference. I didn't really dig into. You were clear on that. हाँ, so engineering, और फिर सबसे बड़ी बात होती है कि जी मेरे जो साथ के स्कूल के पढ़ने वाले या कॉलेज के पढ़ने वाले, दे ऑल गोइंग इनटू इंजीनियरिंग, सो लेट्स जस्ट, तो हम NAD ज्वाइन कर लिया था, एंड द डिसिप्लिन आई टुक वाज मैकेनिकल एट दैट टाइम, और मैकेनिकल वाज, टू बी ऑनेस्ट, वाज नॉट माय डोमेन। बस ये कि जी सब ने, उस वक्त 3 ही डिसिप्लिन मेजर होते थे, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, सो आई टुक मैकेनिकल। तो मैकेनिकल किया हमने NAD से। NAD में हम फर्स्ट टाइम, दैट वाज अ न्यू कैंपस, फर्स्ट बैच था हमारा। तो मैं मैकेनिकल करके निकला, दैट वाज इन 82, और आई गॉट 6 मेरिट पोजीशन। सो ऐसा नहीं कि मैं बस आई पास सेल थ्रू इट, आई गॉट वेरी गुड ग्रेड्स। बट मैंने जब मैकेनिकल किया, आई समहाउ रियलाइज कि यार ठीक है, आई डिड वेल एंड ऑल दैट, बट दैट्स नॉट व्हाट माय इंटरेस्ट एरिया इन इंजीनियरिंग इज। I was kind of looking for something more that involves cost, kind of the soft side of the engineering.
और इंजीनियरिंग में एट दैट टाइम, एंड आई डोंट नो व्हाट द करिकुलम इज़ राइट नाउ फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कोर्स होता था दैट लुक्ड आफ्टर kind of inventory management, cost minimization, or all that stuff. That kind of made me more interesting. So I felt it was more interesting. So हुआ ये कि when I went for masters, I selected industrial engineering. Texas Tech University in Lubbock चला गया था और वहाँ पे मैंने masters in industrial engineering किया. That was my interest area. More into I've been calling it a soft side of engineering, but that's how I felt because mechanical was more core engineering. Or this was more economics. It's more management. It was more management, like it kind of was management. It had all these details of how raw materials handled and all that stuff. So that was interesting for me. मैं वो करके फिर I came back to Pakistan. मेरी of course, as you know, उस ज़माने में, and I'm talking about 84 at 1984 at that time. People who used to come from US, they had some demand of jobs. So I had options of going to 2 or 3 companies में steel mill भी थी और थी. But my first job was with Pakistan Petroleum Limited. PPL. PPL. बहुत से लोग जानते होंगे उस कंपनी को. And one of the reason, of course, like everybody else, they were the big pay masters at that time. तो मैंने PPL join कर दी और उनके materials management department था उस वक्त. And they used to call it store officer. Okay. So I joined PPL and I actually went to a very remote location in Kandkot in interior Sindh. Kandkot, right. And I worked there for 2 or 3 years. So I know a lot of people used to come to me and say, यार तुम अमेरिका से पढ़ के आए हो and you're working here as a store officer और why are you doing that? तो मेरा उनको जवाब ये था कि yes, I know I've been but my main interest area has been supply chain, whether it's material management, it's logistics. This is where I will learn. So, anyway. And you knew that you had a plan. Yes, well, not really. At that age, I mean, that was my first job. I was kind of looking at, let's see how it works in 2 or 3 years. If it is interesting, fine, I'll stay. Otherwise, there are other options. So वो जब मैंने 2-3 साल किया, and it was because being a bachelor working in a remote location wasn't an issue. ज़ाहिर है आप कैंप में रह रहे हैं, you have friends out there. So it worked out well. There were new things to learn about materials. This was more on a drilling location. तो उसमें आपको ड्रिलिंग के मटीरियल्स के बारे में पता चला. I used to go on the rigs and see कि ड्रिलिंग कैसी होती है. तो because PPL is an exploration. It is an exploration drilling company. So that kind of was my career start, and that is where I started in an oil and gas exploration company, and that's how I stayed throughout my career. So somehow that was my start. उसके बाद मेरा कराची में ट्रांसफ़र हो गया. Started doing purchasing and all that stuff. To be honest, that whole working as a buyer or procurement professional or materials management and all that didn't have a lot of involvement of what I had studied. Because like every other job in Pakistan, even आप engineering करके आए हैं, आपका engineering का इस्तेमाल कुछ कम ही होता है. Sure. You're doing more management and trying to manage things and all that stuff. So I was there for 8 or 9 years, and then I got an offer at that time it was Union Texas, Pakistan. That was an American company. It was later bought by British Petroleum. It went through a journey. Arco ने लिया, फिर British Petroleum ने ले लिया. So I stayed with that company. उसमें that was slightly different experience because there were expats involved. थोड़ा सा learning experience मिला, whether it was materials management, whether it was right way of procuring. So I was here in Karachi office. They had an office in Barrier Complex for 8 or 9 years. I worked there. और as usual, like a lot of people, I think वो जो भेड़ चाल चलती है ना कि जी Canadian immigration ले ली. So I took Canadian immigration. I was still working with Union Texas. That was in the 90s. Yes, I'm talking about actually 2000. Okay. Because from 80 to 84, to 8 years, I was in 92, 93, I was PPL, and from 93 onwards, I joined Union Texas. उसमें 5-6 साल बाद I applied for immigration. So we went to Canada a couple of times, and looking at the conditions out there, we decided that it's not really practical to just leave a good job and then come there. But at that time in BP, उस वक्त तक British Petroleum होगी, I'm talking about 2000 now. 2000 में British Petroleum had a policy that if you can find a job within BP in other locations, you have the facility to take that job and leave here and all that stuff. Right. So luckily, I found a job in the materials management group in Calgary, Canada. उन्होंने मुझे job offer कर दी, which was
kind of good enough, although that role was slightly junior to what I was doing here. But of course, monetary wise, it was okay. So I took that role, I resigned here and went to Canada. So that was my new journey. Of course, in Canada, I started as a material management, same as here, went into purchasing, did all kind of supply chain stuff. Working environment was totally different. आपको पता है पाकिस्तान और कनाडा में काम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. It's not just क्योंकि यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो, and I've worked in both PPL and GM Texas, आप सुबह से लेकर रात तक भी बैठे रहो तो that is the understanding कि बस ठीक है वो तो इसने बंदे ने काम करना है. There, the first day I was working after 4 o'clock, one time थे शायद 8:30 to 4 था या 7:30 to 4 था. My manager came to me and said, "Why are you still here?" Why? I said, "Because I have to complete." He said, "No, just go." So, wo ek environment was totally different for me. But that's how different, I guess. So you clearly thrived in that environment. You liked that environment. I loved it because ये कि आपके पास there was no, well, there's always pressure in work, right? आपने चीज़ें deliver करनी है. But and I felt that कि जी 7-8 घंटे are more than enough if you're doing work. और आप उसमें डिलीवर करें नहीं है तो नेक्स्ट दिन करें. एंड पीपल इन कनाडा, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो, कनाडा में पीपल आर वेरी लेड बैक, फेमसली सो लेड बैक. या सो उनका ये है कि देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ प्रेशर. आई हैव वर्कड इन ह्यूस्टन एज वेल, ह्यूस्टन ऑफिस ऑफ बीपी एज वेल. इट्स टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट. वहाँ पे वर्क अमेरिका हाई प्रेशर, एवरीबडी इज रनिंग अराउंड, दे हैविंग मीटिंग्स, दे वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था. तो आई एंजॉयड दैट. वहाँ पे फील्ड विजिट्स भी होती थी. माई एरिया वॉज considering all the warehouses in that location, और फिर procurement था, strategic planning थी, totally, I mean, I shouldn't say totally different, it's still procurement, material management, but a different way of working. So I learned a lot in those 4, 5, 6 years, initial. और फिर जाहिर है कि environment easy है, you can work and all that. उस दौरान, during that tenure, I was given opportunity to work in Azerbaijan as well, so 2.5 years I was in Azerbaijan. Then I also worked in Indonesia for 2.5 years. Our role mostly थे tutoring or mentoring for people and seeing how. Were there smaller markets than Canada? Oh no, they are much bigger. Oh, they're bigger. Actually, Azerbaijan is the BP is the biggest player there. तो उनकी बहुत बड़ी field है उनका. I mean, they got enormous oil potential and all that stuff. Excellent. Indonesia is kind of Canada. They have टांगू फैसिलिटी ऑफशोर में उनका LNG प्रोड्यूस करते हैं. बट ये कि कनाडा से बहरहाल बड़ा सा होता है. इट वाज गुड टू, और फिर इट्स ऑलवेज गुड टू वर्क इन डिफरेंट कल्चर्स. उनका क्या अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रिंगिंग योर ओवरसाइट फ्रॉम अदर प्लेसेस. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग. सो आई वर्कड विद BP फॉर नियरली, well, my whole career was about 30 years. So in 2019, exactly after COVID, I kind of retired from BP. I've been working on off and on part time, कुछ काम कर रहे हैं इधर उधर. So you spent 30 years around in BP, right? I worked in 22 years and then 8 or 9 years in PPL. In right? PPL, yeah. So but all in oil and gas. So 22, 23 years in BP. Yeah. I mean, that's a very unusual thing for anyone, right? To work in one company for such a long time, for over 2 decades. Yes. So was that because you loved the industry, the company, or you just loyal by nature? I guess the advantage to me was it wasn't 22 years same job and same place, right? So I was in Pakistan, I was in the field, I was in Karachi, Badin was the field at that time. Then I went to Calgary. I worked in the field, not really placed in the field, but I had a lot of. So effectively वो अलग-अलग jobs ही थी. अलग jobs थी, different jobs थी, different जगहों पे थी. तो अब जैसे Azerbaijan was a totally different environment. जिस तरह के लोग हैं, how do you deal with them, all that. तो 3-4 साल वो हो गए, इंडोनेशिया में 3 साल हो गए. Then I came back. फिर things kept changing in Canada. Environment change हो गई, organization change हो गई. So we'll talk about Canada in a bit, by the way. लेकिन अभी मुझे बताएं कि जो procurement as a function, as a role, उसमें किस तरह की skills चाहिए होती हैं आपको, and what kind of a person would thrive, would do well in procurement? First of all, जाहिर है कि anybody can do procurement. There's no doubt about it. Anybody who has a knack of knowing material, थोड़ा सा जाहिर है मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, थोड़ी सी IT स्किल्स होनी चाहिए. So you can start from there. That is the. But if you want to thrive in that,
And then of course there are a lot of certifications that you can do and kind of grow on that. CIPS है एक Chartered Institute of Purchasing Supply. Okay. उसमें they teach you a lot of things. उसमें ज़ाहिर सर्टिफिकेशन भी होती है. I think NED में भी कुछ उन्होंने शुरू किया है. But then even if you're not a supply chain degree holder or you're an engineer or you're an MBA, you can still do purchasing job or a supply chain job. There are a lot of certifications. CIPS है Chartered Institute of Purchasing Supply, उनसे certification होती है. Then you can do a lot of training courses on that. So basically to answer your question, anybody can do supply chain, but if you have to excel, then you have to upgrade yourself to get to know a little bit more on that field. And so, like, if you're a fresh graduate out of engineering, an MBA, for example, what kind of a person generally is there? A personality type who generally thrives in procurement, like somebody who's really good at bargaining, for example, somebody who's an extrovert, or is that not true? Or हर तरह के लोग होते हैं? नहीं, उसमें हर तरह के लोग हो सकते हैं, बट दैट्स अ गुड क्वेश्चन. जाहिर है वो एक फील होती है कि जी इफ आई एम गुड एट बार्गेनिंग और आई एम गुड एट नेगोशिएशन दैट आई एम अ गुड बायर. नॉट नेसेसरली, बिकॉज you get to learn things. There are a lot of things that you can learn. Extroverts, I know that I've interviewed and hired a lot of people जिसमें सारे traits हैं, extrovert भी हैं, introvert भी हैं, and they've all excelled depending on their interest. So I think the biggest thing is you have to be interested in that position or role. आपने MBA किया है, आपने engineering किया है, you're trying to find a job. If there's a supply chain job and you get into that and you start working on it, you find it enjoyable, I'm sure you'll excel in it. That all depends on the person. But somehow I feel that there's no a personality quality that you need to be a supply chain professional. Like I said, मेरे different roles में I've interviewed and hired a lot of people. और उसमें हर तरह की personalities. So let's talk about that. So you've obviously hired a lot of people, interviewed, because you've been in senior leadership positions. What kind of people do you generally hire? What do you look for in a candidate when you interview? तो हमारी जो क्राइटेरिया रहे हैं पाकिस्तान में भी और इन कनाडा एज वेल, वी एक्चुअली आस्क फॉर इंजीनियर्स, एंड द रीज़न बीइंग इज इंजीनियर्स जब आते हैं तो अमंगस्ट अदर क्वालिटीज़ मटीरियल और उस तरह की नॉलेज उनमें ज़्यादा होती है. ऑफ कोर्स वी हैव टेकन MBAs एज वेल. तो हमारा मेन क्राइटेरिया, मेन जो हम क्वालिफिकेशन मांगते हैं, इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट लिखते हैं, MBA होती है. एंड वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स किसी भी ट्रेड के, there have been, I know, chemical engineers, metallurgical engineers who come in and excelled in supply chain management. Somehow maybe there's a bias that I had because I was an engineer. I felt that kind of worked for me. लेकिन MBA professionals, we've had legal lawyers come in and doing well as well. So not really specific, but generally हम engineering लेते रहे and they have done well. As a matter of fact, मुझे याद है कि जी हम इंडोनेशिया में जब वो जो होता है ना एंट्री लेवल पे हायर कर रहे थे, उस वक्त भी मेरा एम्फेसिस था इंजीनियर, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस कि जी आपको इंजीनियर मिलेंगे नहीं, यहाँ पे इंजीनियरिंग जॉब्स इतनी है, व्हाई वुड दे कम एंड डू अ सप्लाई चेन जॉब. लेकिन पीपल वर सरप्राइज, देयर वर लॉट ऑफ इंजीनियर्स हु केम इन, जिनको हम उस वक्त चैलेंजर कहा करते थे. दे यूज्ड टू कम इन, वर्क 1 or 2 years, shadow somebody and then get a role. And they worked well as well. So and what other traits do you look for? मतलब जब आप इंटरव्यू करते हैं तो फाइन, देयर क्वालिफिकेशन, यू प्रेफर इंजीनियर्स, उसके अलावा क्या देखते हैं आप? तो डिपेंड करता है किस रोल पे आप ले रहे हैं. अगर आप सीनियर रोल ले रहे हैं, ज़ाहिर है यू नीड दैट एक्सपीरियंस. दे आर अवेयर ऑफ वेदर दे हैव प्रोक्योर्ड और दे हैव डन मटीरियल मैनेजमेंट, डिपेंडिंग ऑन द रोल. लेकिन जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आप लेते हैं उसमें तो जाहिर है जो सॉफ्ट स्किल्स चाहिए होती हैं आपको, दे आर गुड. आजकल अलॉन्ग विथ ऑल द जॉब्स IT स्किल्स आर अ मस्ट. वो तो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आजकल जितने भी सप्लाई चेन के सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो SAP हो या अदर है, उसमें आपको IT स्किल्स की बहुत ज़रूरत है. हम लोग तो हम तो डार्क एजेस के लोग हैं ना, जो हैड स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स. तो प्रेजेंटेशन बनाना भी एक ज़माने में हमारे लिए मुश्किल होता था. तो दोज आर ऑल द थिंग्स कि जी बहुत ज़रूरी है आजकल. यू आर मेकिंग प्रेजेंटेशन, यू आर हाईलाइटिंग द डेटा, यू शोइंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट. तो उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी
हम देखते हैं communication skills of course because you deal with so many people, you deal with external vendors, you deal with internal communication and all that stuff, so उसमें वो चीज़ रहती है। अब उसके बाद तो ज़ाहिर आपका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन। तो एक और चीज़ मुझे बताएं, लाइक सो प्रोक्योरमेंट तो इज़ अ वास्ट फंक्शन, इट्स क्रिटिकल फंक्शन, उसके अंदर व्हाट आर द सब फंक्शंस हैं? मतलब इफ़ आई एम अ प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल, आई हैव ट्रेन्ड फॉर इट, या मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, तो मैं किन किन सब फील्ड्स में जा सकता हूँ विद इन प्रोक्योरमेंट और विद इन सप्लाई चेन एज अ होल? तो आई वुड नॉट कॉल दैट एज जस्ट प्रोक्योरमेंट, मैं उसे सप्लाई चेन कहूँगा। अगर आप सप्लाई चेन की वाइडर फील्ड देखें उसमें बहुत सी चीज़ें, स्टार्टिंग विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कि जी ओवरऑल आपका कितना बजट है, वो हाउ मच ऑफ दैट इज़ मटीरियल रिलेटेड, हाउ मच इज़ मैन पावर एंड ऑल दैट स्टफ, सो वहाँ से स्टार्ट होता है। एंड व्हाट इज़ योर प्लान फॉर द होल ईयर? ज़ाहिर है मेरा तो ऑयल एंड गैस का ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है कि जी अगर आपका 1 साल का ड्रिलिंग प्लान है, यू आर गोइंग टू ड्रिल 4 wells, आपको क्या चाहिए, देन देयर इज़ द एलिमेंट अबाउट मटीरियल्स मैनेजमेंट के जी आपके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री पड़ी है तो आप नहीं खरीदेंगे, सो ऑल दैट टाइज डाउन टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो सप्लाई, गोइंग बैक टू सप्लाई चेन, तो उसमें सिर्फ प्रोक्योरमेंट कम्स एट द एंड। पहले आपको चेक करना होता है कि जी डी हैव मटीरियल्स ऑलरेडी, तो आप क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि होता ये है कि जैसे यूज़र्स हैं, दे जस्ट से कि जी वी आर गोइंग टू ड्रिल अ वेल और हमें ये सामान चाहिए। देन इज़ द सप्लाई चेन प्रोफेशनल हु लुक इनटू कि जी क्या ये मटीरियल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये इज़ इट पॉसिबल कि जी हम कोई और लोकेशन से मंगवा के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिगेस्ट थिंग इज़ वी ट्राई टू मिनिमाइज कॉस्ट, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग कि यार डू यू हैव टू बाय ऑल ऑफ सर। वो सब करने के बाद देन वी गो इनटू द स्पेक्स कि जी आप एज अ यूज़र यू वुड जस्ट से कि जी मुझे तो एक, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, ड्रिल बिग चाहिए, और बहुत दफ़ा ये होता है कि ये कहता है जी वी नीड 2 drill bits। तो सप्लाई चेन प्रोफेशनल का काम होता है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज व्हेन यू गो टू द मार्केट आपको मालूम करना पड़ता है कि जी आप क्या मांग रहे हैं। यू कांट जस्ट से ड्रिल बिट, आपको उसके स्पेक्स चाहिए, मेक चाहिए, आपको साइज़ चाहिए, 50,000 चीज़ें। तो यू गेट दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूजर्स। अ लॉट ऑफ टाइम यूजर्स आर यूज्ड टू इट, दे विल प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ टाइम यूजर। फिर आ जाती है उसमें इक्वलेंसी आ जाती है कि जी ठीक है आप कह रहे हो जी आपको 4 इंच की बिट चाहिए और आपको ये चाहिए, बट वी हैव अ 4 inch बिट विच इज़ अ डिफरेंट स्लाइटेड, कैन वी यूज़ दैट? सो ऑल दैट इज वर्क इज डन एट द बैकग्राउंड लेवल इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू इंश्योर कि जी आप you utilize whatever you have. multiple shades within supply chain. तो और उसके अलावा फिर आप बजट देखते हैं कि इज इट प्रैक्टिकल, फिर आप उसकी लीड टाइम देखते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल कम इन ऐसे कि भाई मुझे ये कल चाहिए बिकॉज आवर ड्रिलिंग प्लान इज स्टार्टिंग एंड वी हैव टू गेट दिस। सो यू हैव टू सी कि भाई एक दिन में आप ये चीज़ मंगा भी सकते हैं, देन यू हैव टू स्टॉप देम ऐसे कि भाई आप कहीं से ही मंगा ली, यू विल नॉट गेट दिस मटीरियल। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। एक दिन तो कोई भी नहीं करता, लेकिन लेट्स अज्यूम वो कहता है जी मुझे तो वी आर स्टार्टिंग अ ड्रिलिंग प्रोग्राम इन 30 days एंड वी वांट ऑल दिस मटीरियल। इट डजंट वर्क दैट वे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सप्लायर्स आपके पास बैठे हों आपको सामान देने के लिए। अभी लेटली आपने देखा होगा ना, कोविड के बाद हर एक प्रेसिडेंट बाइडेन से लेकर हर एक कह रहे हैं कि सप्लाई चेन इश्यूज़ हैं क्योंकि हमारा मटेरियल नहीं आ रहा, चाहे वो चाइना से नहीं आ रहा। सो ऑल ऑफ दैट रिलेट्स टू कि जी सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स आर डूइंग द जॉब राइट, कि जी आपके पास सामान टाइम पे पहुंच रहा है और नहीं पहुंच रहा। सो हैविंग सेड दैट, मटेरियल्स हो गया, फिर लॉजिस्टिक्स है कि जी अगर आप एक चीज़ पाकिस्तान में ही मंगा रहे हैं तो दैट इज़ फाइन, बट अगर आप यूएस से मंगा रहे हैं देयर इज ड्यूटी इन्वॉल्व, देयर इज कस्टम एंड फ्रेट इन्वॉल्व, देयर इज पेमेंट्स इन्वॉल्व, ऑल दोज थिंग्स फॉल अंडर द, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। आई नो सप्लाई चेन में बाज़ दफ़ा कस्टम्स क्लियरेंस भी आ जाता है, इट डिपेंड्स हाउ द कंपनी इज ऑर्गेनाइजिंग है, तो वो एलिमेंट भी आ जाता है। So from start till the end you get the material, that's all supply chain. That's all supply chain. Yeah. तो it seems to me कि supply chain का जो काम होता है supply chain professional का, it's not done in a vacuum. मतलब supply chain professional का काम जो होता है it's in constant communication with other people, like with other functions, like with finance, with business, with like all of the functions really, right? You actually hit the nail on the head, क्योंकि ये बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी आपके पास requisition आ गई, आपने खरीद दिया। If you're doing the job rightly, that is exactly what you have to do. You have to check everybody, get everybody's 50 लोगों से। So how do you develop those communication skills? Because if somebody comes to you and says कि फ़हीम साहब मुझे ये drilling start करनी है in next week, एंड हमने तो प्लान बना लिया एंड अब आपकी ऊपर है, अब आप हमें
सारे equipment लेके दें. Now you have to communicate with that person. So how do you communicate with difficult people? Of course, there are forms and procedures वो डेवलप होते हैं कि जी अगर किसी को चाहिए, they'll make a requisition. बड़ा common word है कि जी आप requisition बना के देंगे, we need this one. The supply chain professional का काम है कि get that information from the users as well. अगर उन्होंने description सही नहीं दी है, फिर get some more information. I know generally ये होता है कि जी ये buyer है, इसको क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ें मालूम करने की, just go and buy, I'm telling you to do that. So the idea is the supply chain professional to add some value into that and say कि भाई आप ये मांग रहे हैं, first of all I need more details, और आप कह रहे हैं 3 महीने में और 3 महीने में नहीं आ सकता, plus we already have this. So all those discussions keep on going at the back end. वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि procurement starts when the buyer receives a requisition कि भाई ये चीज़ चाहिए. That doesn't mean कि आँख बंद करके जो buyer है ना just goes and buy. Depending on the buyer or the professional, that is his job to understand what it is and what value he can add to the company. Supply chain is all about adding value to the company. अगर आप एक चीज़ जो आप let's assume $10 की खरीद रहे हैं, आप उसको $5 की ले लेते हैं, you can understand कि what impact that will have on the company. मैं तो एक बड़ा छोटा example देखता हूँ, लेकिन I know when we used to work in, चाहे वो कनाडा हो या ह्यूस्टन में है, the biggest thing at that time was कि how much money has supply chain saved. तो अगर आपने let's assume आपके पास 2 मिलियन की इन्वेंट्री है, आपने उसको इन्वेंट्री का यूटिलाइजेशन कर दिया, आपकी वो ज़ाहिर है कॉस्ट, दैट इज़ अ सेविंग इन कॉस्ट. या आपने कोई आइटम, बहुत बड़ी आइटम आपने सस्ती ले ली, that all comes down to the company's profit and all that stuff. So that is a big element. So like I said, purchasing is not just purchasing. It involves a lot of people and it involves a lot of things. And sometimes you have to push back also, and that's also part of the value addition. Yes, exactly. And that is a good point that you raised. A lot of time, like I said, is a buyer going to a senior drilling professional will say, yeah, ये आप क्यों ले रहे हैं? So you will say, भाई तुम अपना काम करो, I know what I'm doing. But then getting that information, why you're using it, why you're ordering this, can you use this, all those discussions happen in the back end. How effective and good the professional is and how easily he can, I guess, communicate is a ability. और वो communication skills जो थी वो आपने like were those inherent, inbuilt, या आपने कहीं से सीखी, like, or did you have a mentor? How did you pick those up? I did have a mentor off and on, Canada में या पाकिस्तान में. It helps because अगर आप कहीं फंस जाएं कि भाई I'm trying to get this through this person and he's not helping, he's not responding. So there's always those discussions that keep happening. It does help a lot. But communication skills comes with, of course, depends on your education. आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, and then you practice. I know the first time you, and that happens with everybody, first time जब आप presentation करने जा रहे हैं 10 आदमियों के, so that takes a lot of courage. वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं. I have done presentation skills की training भी बहुत होती हैं. वो we've done that on how to do that. Negotiations, yeah, I'm sure वो भी negotiation की तो बहुत सारी training होती है. Popular training है. Supply chain में the most popular training is negotiation skills. और उसमें different ways हैं. आप जापान में चले जाएं, they have a different way of doing. आप यहाँ of course culturally different होता है. And you're negotiating with everyone, with the suppliers as well as your own people. Yes. और उसकी I know negotiation skill की जिसने training की है उसमें they role play as well and they record it and they say तुमने ये सही नहीं किया, this was not the right way. That all helps you, but that's all part of training and all that. Somebody comes in a new role in any organization, I think the biggest thing is, और मेरे ख्याल से अगर आप कनाडा की बात करें, मैं लोगों से यही कहता हूँ कि when you go to different places, you have to upgrade yourself. चाहे आप through training करें, चाहे through experience करें, you have to upgrade to be able to work in that role, चाहे आप new environment में जाएं या new job में जाएं. And let's talk about Canada, because you were one of the before it was really popular to immigrate to Canada, you immigrated in early 2000s, right? 2003. 2003. So आजकल it is a big trend, it's a big move to go to Canada. आजकल बहुत सारे लोग जाना चाह रहे हैं. A lot of young people are applying to Canada. A lot of elder people are advising young people to go to Canada and all of that.
what is your observation, what has your observation been as somebody who's been living in Canada, देखते हुए कि पाकिस्तान से इतने सारे लोग आ रहे हैं, what are the trends that you've observed, किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या सोच कर आते हैं लोग और उनको क्या तैयारी करके आनी चाहिए? So just a little summary of that. I think I was probably one of the lucky ones कि मेरी job transfer हो गई थी and we went to Canada and I have seen a lot of people who have come in, graduates, engineers, doctors, and everybody has struggled. And when I say everybody, I mean majority of people have struggled because it's not really easy to find a job when you go in Canada. और ये मैं सबसे कहता हूँ जो इमिग्रेशन के लिए जाते हैं कि जी मैं जाऊँगा वहाँ पे everything will be fine, सब सही हो जाएगा, job और सब कुछ सही हो जाएगा. It's not how it works out there. Canada is kind of a very, and probably in other regions, closed environments. They are not a lot of jobs, but at the same time there are jobs if you are qualified and you have the competency for that. तो अगर आप एक इंजीनियरिंग करके गए and you think कि जी मुझे कोई कंपनी जॉब दे देगी, it doesn't work that way. वहाँ पे आपको whenever you going to any new place, आपको थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो whenever you going, you just understand कि जी मैं जाऊँगा तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैं जाके सीधा जॉब नहीं कर दूँगा, and that helps a lot. अब डॉक्टर्स भी हैं, they don't take MBBS doctors from Pakistan and they start working. उनको I don't know all the details for medical, but 3-4 साल जिसे कहते हैं रगड़ा खाना पड़ता है वहाँ पे. They take exams, they do that, and then they can work. तो इसी तरह इंजीनियरिंग में आप जाके इंजीनियरिंग जॉब नहीं कर सकते. वहाँ पे रेगुलेटर्स हैं, एपिगा एक फर्म है जहाँ पे यू हैव टू पास एग्जाम्स टू डू अ इंजीनियरिंग जॉब. बट एट द सेम टाइम कनाडा में एक बड़ी चीज़ है, दे आस्क फॉर कैनेडियन कॉन्टेंट. अब अगर मैं कनाडा में जैसे आई एम हायरिंग मैनेजर, आई लुक फॉर हायरिंग अ पर्सन, तो मैं देखता हूँ यार ये तो फ्रेश ग्रेजुएट आया है, इसका तो कैनेडियन, मैं इसको ले लूँगा, ही वोंट इवन अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क इन दैट एनवायरनमेंट, हाउ टू कम्युनिकेट. सो वो एक एलिमेंट बहुत ज़रूरी है कि जी जब कोई जाता है दे नीड टू अंडरस्टैंड कि दे हैव टू गेन सम काइंड ऑफ वेदर सर्टिफिकेशन, सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, सो दैट इट ब्रिंग्स सम काइंड ऑफ कैनेडियन कॉन्टैक्ट. और उसमें यू हैव टू कीप इवॉल्विंग. कैनेडियन कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट, चाहे वो उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा आपकी सर्टिफिकेशन या कुछ एजुकेशन हो जाए. बहुत से लोग तो जाके इफ दे हैव डन इंजीनियरिंग डिग्री, दे डू MBA एंड ऑल दैट हेल्प्स कि अगर आपने वहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है. एक्लाइमेटाइज भी हो जाते हैं आप ज़रा, यस, ओरिएंटेशन हो जाती है आपकी एक तरह. बिल्कुल बिल्कुल. तो और जो बच्चे वहाँ से पढ़ते हैं, यू कैन फील द डिफरेंस कि जी उनकी जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो लोग डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं उनको. तो दैट इज़ वन थिंग, क्योंकि मैंने ये देखा है बहुत से लोग आते हैं, दे कांट फाइंड अ जॉब बिकॉज दे हैवंट done anything different, they haven't upgraded themselves, and they start doing kind of odd jobs, or they continue with that. I think ठीक है, odd jobs, I'm not saying anything against odd jobs, जाहिर है you have to survive, you have to do some work as well, लेकिन साथ साथ आप देखते रहें कि जिससे नई अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने आप को अपग्रेड कर लूँ या मैं कुछ कर लूँ, एंड देन ट्राई टू डू दैट. इट टेक्स टाइम. यू कैन स्टार्ट वर्किंग, आप कोई और जॉब्स करें, बट इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, वेदर आप इंजीनियर हैं या आप लीगल हैं, आप लीगल में ही देख लें कि अगर आप यहाँ से LLB करके जाते हैं, डोंट एक्सपेक्ट कि जी आपको वहाँ लीगल जॉब मिल जाएगी. दे हैव अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट कि जी, और लोगों ने किया है, ऑल द लोकल पाकिस्तानी जो वहाँ रह रहे हैं, बच्चे हैं. मेरी माई डॉटर इन लॉ हरसेल्फ इज़ अ लॉयर, जिसने इनिशियली ज़ाहिर है पाकिस्तान से पढ़ा है, देन शी क्वालिफाइड एंड डिड ऑल ऑफ दैट. तो वो सब चीज़ें जब वहाँ के लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आई थिंक दे हैव टू स्ट्रगल अ लिटिल बिट टू गेट इनटू दैट नॉर्म. और फिर दूसरी चीज़ आई थिंक जो मैं मेंशन करना भूल गया, पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड विद द वेदर इन कनाडा एज वेल. जो बहुत से लोगों का था ये सर्दी में है, ये वो, they have to be ready कि जी you are going, it's not like आप जाएंगे और वहाँ everything is fine. You have to understand कि जी weather भी extreme है, वो बात तो नहीं है जो यहाँ पे है. You can't go out and do everything, weather cold है, सोच के निकलना पड़ता है, और jobs नहीं हैं, तो it's not that easy. I guess it's very strange कि यहाँ अक्सर लोग, in fact the majority of the people जो immigrate करते हैं यहाँ से, वो कभी कनाडा गए नहीं होते हैं, और लॉक स्टॉक एंड बैरल सब कुछ उठना, सब बोरिया बिस्तर समेट कर वो मूव हो जाते हैं.
and then of course they get a shock, right? Because they've never been there, they don't know what to expect really. जब वो पहुंचते हैं तो कल्चर शॉक, वेदर शॉक, हर चीज़ के शॉक होते हैं, स्पेशली जो आपकी बात सही है कि अगर कोई पहले गया नहीं है, पीपल हैव विजिटेड एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ कि जी आप आई नो देयर टू माइंड्स कि जी आप कुछ सब कुछ बेच के ना जाएं, पहले देख के आएँ एंड सी। तो फिर लोग कहते हैं जी 2 बोर्ड्स में हम रह नहीं सकते, आई तो बट द आइडिया इज़ जस्ट गेट रेडी, बी रेडी कि जी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, जॉब इतनी आसान नहीं है, यू हैव टू हैव दैट मच कि जी आप 6-8 महीने सर्वाइव करें, अल्टीमेटली जॉब मिल जाती है। इट्स अ ह्यूज कंट्री और जॉब्स भी हैं, और डजंट हैव टू बी कि जी आप सब लोग जाके वहाँ टोरंटो में बैठ जाए, दैट इज़ अनदर इशू। एवरीबडी फ्रॉम पाकिस्तान दे जस्ट गो टू टोरंटो कि जी वो आसान है, वहाँ इमिग्रेंट्स भी बहुत हैं, आई जस्ट गो एंड लिव देयर। वहाँ बहुत सी रिमोट लोकेशन, आई नो आई हैव फ्रेंड्स हु केम इन ऑन डिफरेंट वीज़ाज, चाहे वो क्यूबेक के फ्रेंच उस पे आए या किस आए, एंड दे हैव डन डिफरेंट जॉब्स एज वेल। बहुत से लोग फार्मिंग में चले गए, फार्मिंग इज़ समथिंग दैट हम लोग के लिए डिफरेंट है, लेकिन वहाँ पे लोगों ने किया। सो इट्स नॉट दैट कि आप जाएंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, यू विल सर्वाइव, बट इफ़ यू रियली वांट टू बी doing what you really love to do, so you have to upgrade yourself. So if you had a loudspeaker, you could speak to all the young people in Pakistan, सही है? तो आप उनको क्या कहें? आप उनको कहेंगे कि yes, अपने IELTS दो जल्दी और जल्दी से कनाडा आ जाओ, या what would you tell them? नहीं, मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि अब कि जी if you want to come to Canada, definitely आओ, but just be aware कि it won't be that easy. आप तैयार रहें कि जी देयर विल बी इश्यूज, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू विल थिंक अबाउट जी आई हैव टू गो होम एंड ऑल दैट स्टफ, बट जस्ट बी प्रिपेयर्ड। और वो हर जगह ही है, इफ़ यू गोइंग टू न्यू प्लेस, जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर थिंग्स दैट यू weren't एक्सपेक्टिंग टू हैव। बट येस, आई थिंक यंगर जनरेशन को honestly, with the conditions that are in Pakistan right now, there's definitely a lot of people who want to get out of here because they are all qualified. They're not finding jobs here. तो अगर उनको whatever they have qualified उसका 20 या 30% का भी मिल जाता है, they would prefer working out there क्योंकि you can build on that. तो ठीक है, बिल्कुल आएँ, ज़रूर आएँ, but just be prepared. That's what my point of view is. And what's your favorite advice to give to young people? जो आप हर किसी को देते हो? मैं यही देता हूँ, जस्ट अपग्रेड योर सेल्फ, जस्ट डोंट सिट ऑन इट कि जी मैंने कर लिया है, नाउ आई कैन वर्क फॉर ऑल ओवर लाइफ। हमने अपने थ्रू आउट करियर में ठीक है हमने इतना नहीं किया, बट आई हैव डन माई CIPS सर्टिफिकेशन, आई हैव डन अदर थिंग्स, आई हैव डन ऑल दोज डिफरेंट कोर्सेज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल दैट। सो और फिर सबसे बड़ी बात आजकल जो IT का है ना, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। आप नया सॉफ्टवेयर ले रहे हैं चाहे कंपनी में, कर यू हैव टू लर्न दैट एज वेल। एक ट्रेंड ये भी है हम लोगों में, आई थिंक मैं भी उसमें शामिल हूँ, यार ठीक है वो बंदा है ना वो चलाएगा, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। जस्ट ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन दैट। IT स्किल्स आर आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो सबको चाहिए होती हैं। तो गेट इन्वॉल्व, लर्न न्यू थिंग्स। अगर आपका एक जॉब है जो आप कर रहे हैं, एंड आई नो कैनेडा में दे वेरी मच अप्रिशिएट कि जी आपका जॉब के अलावा यू डूइंग एडिशनल थिंग, तो दे अप्रिशिएट कि जी ही इज़ नॉट जस्ट सिटिंग देयर टेकिंग दैट एंड रिवॉर्डेड आल्सो। तो मेरा एडवाइस यही होगी कि ठीक है आपने क्वालिफिकेशन डिग्री ले ली, बट जस्ट ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, अपग्रेड योरसेल्फ एंड लर्न मोर। That brings me to like my last question, I forgot to ask it earlier, कि जो आज artificial intelligence is really like on the rise, everyone's talking about it, it's really the buzzword. तो procurement में artificial intelligence की कितनी एंट्री हो चुकी है, यू नो कितनी पेनिट्रेशन हो चुकी है, एंड हाउ हैज़ इट चेंज्ड प्रोक्योरमेंट? तो आई थिंक जब तक मैं करता रहा तो आई हैव नॉट विटनेस्ड एनीथिंग। दिस आर्टिफिशियल हैज़ रियली इवॉल्व्ड इन द लास्ट 2-3 years, but of course like everybody is trying to figure out what AI is going to do, it will affect a lot of jobs, there's no doubt about it. जैसे आप बात करें ना, प्रोक्योरमेंट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, तो जो सिंपल जॉब्स हैं, जो उस टाइप की जॉब्स, आई एम प्रीटी श्योर कि AI विल टेक ओवर एंड ऑल दैट, बट देयर इज़ अ बिग एलिमेंट अबाउट strategic planning and all that I think would need still professional. But it's too early, I haven't really been involved, so I can't say, but definitely there will be a reduction in jobs like every other field. Or like a change in the job mix. Exactly. And kind of. Bilkul. How that will impact, it's too early to know. I know AI has come in like everybody is into
jumping that bandwagon Yeah. and saying कि जी ये इस तरह होगा. Let's see how that works out, but it will definitely impact a lot. Let's see, we'll see. But thank you so much for being here, Fahim Saab. It was a pleasure talking to you. It was a rare window. You were visiting family, I know, and you were here from Canada. But it was a pleasure talking to you. Thank you so much for your presence. No, thank you for having me, Haris. Or I've seen a lot of your other Kaam Kahanis and all that stuff, and I thought these are very interesting. Especially यहाँ के बच्चों के लिए जो who are looking for careers and all, they need to listen to different people who are talking about what they have done. That is really helpful. Thank you so much, and that's the idea. Bilkul. Yes, thanks a that lot. is. Thank you. Thank you for watching Kaam Kahani. Until next time, see you with another Kaam Kahani. Khuda Hafiz.